Can you hear me? Yes, Can you hear me? yes. Okay, so hi, welcome everyone, and I am Vinay here, and today I'm going to talk about aspects of mindfulness while you do business. You have been seeing me on many occasions on various topics of mindfulness, and in the area of conflict, communication, forgiveness, and many other areas for many years now. I've been doing this session since last 2020. So today I'm going to talk about my experiences of businesses. I'm being a business coach, and I help organizations or business owners to scale up profitably. So I have collected a few experiences in the business coaching. I want to try those experiences to put here and talk about it in the aspect of mindfulness. So, but no matter even if you are not a business owner, no matter even if you are aspiring to be a business owner, or you are a mature business owner, or somebody who is a trainer or a coach who want to somehow enter into the business of coaching. So wherever you are perfect right now, and this session is going to be a little helpful for you, or not. If it's not that great, but yes, for the business owner who have a business mindset, the session is going to make a huge impact. But even if you are not, but the session is going to come as a good handful inputs for you from your side. Now, while you are talking and speaking the business thing, many a times, not many times, in fact, I've seen and been coaching individuals also and entrepreneurs also. And in my experience, I've seen a lot of entrepreneurs or so-called entrepreneurs or aspiring entrepreneurs uh, cannot see why they're in this business. So even if they have to, let's say take an example of coaches and trainers. If I ask them why you are in this business, why you are in this work, so they will say, I'm very passionate about this work. I just love this work. And but when I talk to them, whether you want to scale up as a business owner, they feel speechless. They say, "What exactly are you talking about? I'm just delivering a talk. I'm delivering a coaching session. And I'm getting money and so on and so forth." And uh, then again, it's not about the one person. If you go on to uh, talking to other solopreneurs, maybe any consultant or maybe a financial consultant, if you ask them how they are going to do their businesses, they will say, "Okay, I'm just having a chartered accountancy firm, and I am providing services to my clients, and I'm earning money, and that's all." So, what exactly do you mean by businesses? Because this is a business. So, if I go to any other solopreneur, maybe a shopkeeper or a retail person, retail business owner, if I talk to them, I also get the same response. So I'm here because I'm already earning money. I'm already earning money, and that's what the business is all about. Is the business is only and only about earning money? That's the key question that I am going to talk about today. In fact, I'm going to talk about the three pertinent questions which is going to impact the way you think, the way you feel, and the way you act in your pursuit of doing anything in your life. Now, if you want to take it as a business, perfect. If you want to take it as in life, that is also perfect. But today, because the session is about business mindfulness and you can try and connect all those dots together. Now, the very first pertinent question that I often ask to the entrepreneurs or the business owners or the organizations also who drive the businesses, the first key question is, what is the purpose why you are here in your business? आप क्यों हो इस बिजनेस में? आप क्यों क्या करना चाहते हो? आप किस लिए आए हो बिजनेस में? क्या करना के लिए आए हो? यार को करना क्यों है बिजनेस? तो बहुत लोगों के पास सवाल ये आता है, जवाब ये आता है, जैसे मैंने अभी अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया कि पैसा कमाना ना, पैसा बनाना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, पैसा बनाना है। पर उससे पहले क्या आपने अपना पर्पस का क्लैरिटी किया है?
कि आप जो बिजनेस को ड्राइव करोगे, या आप फॉर दैट मैटर अपनी सर्विसेज को भी ड्राइव करोगे, जो कि आपको उसको बिजनेसेस लगते हैं, तो आपका पर्पस क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज योर पर्पस? नाउ when I ask this, I want you to consider one situation, and hear me very carefully. Consider one situation. The situation is like this. Let's assume God comes down on earth. Bhagwan niche aaya, and he asks you one thing. And what is that one thing? He says, God says that you have only 2 minutes to live, and you will be dying after 2 minutes. You don't have any more time. But I give you one boon. I give you one वरदान. और वरदान क्या है? कि you can ask anything. Anything means anything for the world. यूनिवर्स के लिए आप सब कुछ मांग लो, अपने सिवा। अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ नहीं मांग सकते, पैसा नहीं मांग सकते, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांग सकते, आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते, नॉट विद इन योर फैमिली और योर अपने आप को किसी को कुछ नहीं मांगना, लेकिन आपको वर्ड के लिए मांगना है. You have to ask for the word. Now, if I may ask you, I mean, maybe you can put in the chat box, or you can start thinking and writing on your notebook. कहीं पे भी हो, किसी भी तरीके के हो, कहीं भी प्रोफेशनल हो, कोई भी सर्विस हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, जहां पे भी कुछ कर रहे हो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर ईश्वर नीचे आकर के बोलता कि बस सिर्फ 2 मिनट है और आपको मांगना है, क्या मांगना है? कि वर्ड में, वर्ड के लिए क्या चाहिए? सो आप अपनी फैमिली के लिए नहीं मांग सकते. तो व्हेन आई यूज्ड टू कंडक्ट दिस trainings, so a lot of people used to give me different answers. People used to say, from the business perspective, I really want to ensure that a lot of people are, getting joy and happiness by using the product I'm manufacturing. A lot of people used to say, कि मैं क्या मांगता हूँ कि लोगों की खुशी और जॉय मांगता हूँ. कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मुझे चाहिए कि वर्ड के अंदर सब लोग हारमोनियसली रहे. कुछ लोग ये मांगते हैं, और कुछ लोग ये मांगते हैं कि वर्ड में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां पे एवरीथिंग बिकम्स सस्टेनेबल. कुछ लोग ये मांगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव आस्क्ड डिफरेंट थिंग. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जहां पे एवरीथिंग इज सस्टेनेबल, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक. कुछ लोग ये मांगते हैं कि लोगों जो खाना खा रहे हैं वो बहुत फ्रेश खाना खाएं, जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स ना हो. तो कुछ लोग ये भी मांगते हैं. People ask health also for the whole world, कि there's सब पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे हेल्थ और फिटनेस हो, सभी लोग फिट हो, हेल्दी हो, mentally fit हो. There are different answers. You can also think, if I ask you, or if I give you a situation that God asks you, you have 2 minutes to live, and if you ask, what are you asking for the world? Now, whatever may be your answer, you can take some time to think as I'm saying it. Whatever may be the answer, that defines the purpose of your life. आपका पर्पस क्या है? Because this is what you are willing to die. If you ask me as a business coach, what is that I'm willing to die at this point in time? If God comes down, if ask me कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं और अब 2 मिनट में आप वर्ड में सभी के लिए कुछ मांगो, तो मैं क्या मांगता हूँ? मैं बिजनेस एरिना में अवेकनिंग मांगता हूँ कि सभी लोग इतना कॉन्शियसली बिजनेस कर रहे हो और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो हमेशा लोगों को. और वो बिजनेस ओनर्स, लीडर्स, बिजनेस ओनर्स हैं और लीडर्स बना रहे हैं, और वो लीडर्स फर्दर लीडर्स बना रहे हैं. एंड देयर इज एन इकोसिस्टम ऑफ बिजनेस, कॉन्शियस बिजनेस लीडर्स, कॉन्शियस मतलब अवेकन्ड बिजनेस लीडर्स, हु ओनली एंड ओनली थिंक ऑफ एवरीवन एल्स. वो सभी के लिए सोच रहे हैं. मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं किसके लिए मरना चाहता हूं, कि अगर मैं मरूं तो ऐसा बिजनेस में हो रहा हो. ये सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी लोग हार्मोनियसली जी रहे हैं, और सभी लोग लीडर्स बिजनेसेस हैं, और सभी लोग लीडर्स बिजनेसेस को इंस्पायर कर रहे हैं. देयर इज अ ह्यूज
huge happiness all around the world, the huge awakening about the whole humanity all around the world. This is what I'm asking when I'm dying. This is what I'm asking from God. Now you can also check out, आप क्या मांगते हो आपके पास अगर 2 मिनट हैं तो जीने के लिए. So now this defines, ये जो है ना आपका, ये आपका पर्पस है. This is the purpose of you, who you are. Now, whether you want to apply in your business, you want to apply in your personal life, to do whatever you want to do in your life, कुछ भी करना चाहते हो, this is the purpose of your life. Now, मैं ये नहीं कह रहा कि ये purpose clearly defined हो सकता है, because this is one way to reach out to the purpose. In my workshops, in my leadership workshops, when I conduct for many corporates and also the individuals, the public workshops also. Now, there is a fixed process through which people can reach out to the purpose of their life. Now, in this 25 to 30 minutes of session, I cannot promise you that you will actually reach out to the purpose, but that is the beginning point of identifying your purpose. What are you willing to die for? आप किसके लिए मरने को भी तैयार हो? भगवान आता था बोलने के लिए, तो आप जो मांग रहे हो वर्ड के लिए, जो भी मांग रहे हो, तो उसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो. दिस इज द पर्पस. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ going towards the purpose of your life. So we'll talk about more in the purpose in some time. Now the second question, in your domain, in your area, wherein if you want to apply it in your business or in your family or anywhere. But because this is the context of the business, as an entrepreneur, solopreneur, or a business leader, so the second pertinent question is, where do you want to see yourself in the next 3 years? Now, there are various people. Now, this is the end of 2023, and people are all, going ahead and talking and setting up various goals for 2024. Now, my question is, my experience, अब आप 1 साल के लिए अगर आप मांगते हो, 1 साल के लिए आप गोल्स बनाते हो सिर्फ, तो आप ओवर प्रॉमिस करोगे. नॉर्मली ऐसा होता है, देखा गया है. और 5 साल के लिए मांगते हो तो अंडर प्रॉमिस करोगे. यहाँ 5 साल के लिए अगर आपने गोल्स डिजाइन किए हैं कि मैं अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में कहाँ जाना चाहता हूँ, तो 5 साल के लिए सोचते हैं तो बहुत आगे तक सोचते हैं, और कम कम मांगोगे, और 1 साल के लिए मांगोगे तो ज्यादा मांगोगे. But that's why, I ask you to think about 3 years. The next 3 years, where do you want to go? Now, that question comes only and only after the purpose thing. कि पहला सवाल क्या है? कि पहले आपको मांगना है कि किसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो. जब वो पर्पस की क्लैरिटी हो जाती है, then start looking at the vision. अब ये जो चीज है ना, ये आपको अकेले नहीं करना. Let's say if you are owning a business enterprise, if you have teams with you, if you have people around you, you have to do this exercise with your team. अगर आप घर में बैठे हो और आप घर में विजन बना रहे हो, तो फैमिली के मेंबर्स के साथ ये विजन बनाओ. बिकॉज इट इज अ बिजनेस क्लास, इट इज अ बिजनेस सेशन. आई एम आस्किंग यू इफ यू कैन visualize for yourself in the next 3 years, where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हो, ये आप क्लियरली डिफाइन कीजिएगा. क्योंकि पर्पस पर पहले पर्पस होना चाहिए. जब पर्पस की क्लैरिटी होती है, जब मिशन की क्लैरिटी होती है, मैं क्यों हूं, तब विजन देखिएगा. ऐसे में हवा में नहीं. क्योंकि अगर आप बिना पर्पस के अगर आप विजन देखेंगे, तो विजन बहुत देर तक नहीं चलेगा. दैट इज द होल रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू फुलफिल अवर रेजोल्यूशंस व्हाट वी मेक एवरी डे. हम हर रोज घूमते हैं, हर रोज जाते हैं. अब कोई ना कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम हमेशा हम हमेशा रुक जाते हैं. बीच में हम अपना सेशन बीच में हम अपना गोल्स को छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ते हैं? बिकॉज द पर्पस इज नॉट क्लियर. So that is where the first thing I want to ask everyone is, what are you willing to die for? But that's just not about you. It's about the personal life. The second is, where do you want to go in the next 5 years? Now, अब क्या है? Sorry, not 5 years, 3 years. I'm sorry for that.
3 साल में आप कहाँ जाना चाहते हो, वो क्लियरली डिफाइन कीजिए एग्जैक्टली। दैट इज द विजन। बहुत लोग ये गलती करते हैं, विजन को और मिशन बनाते हैं, मिशन का विजन बनाते हैं, बट विजन का मतलब है कि कहाँ अपने आप को स्पेसिफिकली देख रहे हो। अपनी हेल्थ, लेट्स से अगर आप इंडिविजुअल हो, बिजनेस ओनर नहीं हो, तो अपनी हेल्थ में कहाँ देख रहे हो, अपने फाइनेंसेस में कहाँ देख रहे हो, और अपने रिलेशनशिप्स में कहाँ देख रहे हो, क्लियरली डिफाइन। बट इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, लेट्स से इफ यू आर अ सोलोप्रेन्योर and you have one or two people team, and you sit with them and you ask them and ask everyone to come together, and आप बोलो उनको कि हम 3 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, हमारा प्रॉफिट्स कहाँ पे जा रहा है, हम किस प्रॉफिट्स की तरफ देख रहे हैं, कौन से रेवेन्यूज, हमें कितने पैसा हम बना सकते हैं अगले 3 साल में, वेरी वांट वो गो इन नेक्स्ट 3 years in terms of your profit. अच्छा, उसके बाद what is the next point? First point is profit. Second is the positioning. Now, what is positioning? Like, what exactly I am catering to? Who am I catering to? Where is my market? Let's say if you are a business owner uh, what do you say, garments. So, where is exactly your market? Is everyone is a market? You have to really think about it again. Let's say if you are a chartered accountant, where is your market? Is everyone's market? You have to think it again. What is exactly specific area that you are catering to? What is the position in the market? So now this is where you talk about it with your team members कि आप कहाँ पे किस मार्केट को केटर कर रहे हो, क्या है आपका। जैसे मैं एज ए बिजनेस कोच हूँ, और मैं मेरा मार्केट बहुत ही क्लियर है। मैं, although I come and conduct sessions here, but my market is I only cater to small business owners who have certain fixed processes that are already catering to. They're not only owner driven organization. कुछ तो उनके पास एक head of departments हैं जिनको वो cater कर रहे हैं, and their turnover is more than 50 CR. And what I help them to scale up. Our team helps them to scale up effectively. उनके top line, उनके profit और उनकी bottom line, सॉरी उनकी टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू, उनकी बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट्स में हम लोग हेल्प करते हैं, और 3 साल में वो स्केल अप कर सकते हैं। बट पहला उनसे सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ क्यों करना चाहते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस, दैट मीन्स व्हाई यू एग्जिस्ट as a company or a business. Second is what are you willing to die for exactly. Second is what is your vision next 3 years, आप अपने आप को कहाँ जाना चाहते हो, और विजन के अंदर भी क्या है आपका, पहला क्या है कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हो 3 साल में, और फिर आपकी मार्केट क्या है, किस मार्केट को केटर करना चाहते हो, क्या आपका पोजीशन है मार्केट में, किसको बताना चाहते हो। अगर आप डॉक्टर्स हो तो कौन से डॉक्टर हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो किस एरिया, किस किस लोगों को आप ट्रीट करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप कौन से सेगमेंट को केटर करना चाहते हो, किस इंडस्ट्री को केटर करना चाहते हो। सो यू हैव टू रियली बी वेरी क्लियर ऑन द फर्स्ट इज द प्रॉफिट, सेकेंड इज द पोजिशनिंग, थर्ड इज द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्या है। अब बहुत बोलेंगे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट होता है, मतलब जिस जो हम बेच रहे हैं उससे हमें पैसा मिल रहा है तो हम उसको हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। पर क्या वो प्रोडक्ट है। इमेजिन कीजिए कि आप प्रोडक्ट एज अ बिजनेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेस डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट और सर्विस दो अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। आई गिव एन एग्जांपल। आप जितने भी आप होलसेल मार्केट्स में जाते हो और रिटेल मार्केट्स में भी जाते हो, वो कहते हैं कि वी आर डूइंग बिजनेसेस। उनसे पूछो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कहते हैं, क्या प्रोडक्ट है, ये सामान आता है रिटेल काउंटर्स में, हम भी बाय मोबाइल फोन्स और प्रॉब्ली द इलेक्ट्रॉनिक फोन्स गो टू नैरो प्लेस करने से इतने लैपटॉप्स आते हैं, इतने मोबाइल फोन्स आते हैं, हम उसको खरीदते हैं, कस्टमर वॉक इन करता है एंड वी सेल दैट प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट अ सर्विस। आप आते हो, बेच देते हो सामान और जिस दिन आपका दुकान नहीं खुलता है, जिस दिन you don't open your shop, you don't make money. All right. Now, what is the product? There's no product. Now, I always say product is like washing machine. जो कपड़े धोती है, बार बार धोती है, बार बार धोती है, बार बार धोती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सर्विस क्या है कि कपड़े धो रहे, आप कपड़े जो धोने हैं वो आप बाहर से भी लॉन्ड्री से भी धुला सकते हो। लेकिन इफ यू हैव अ प्रोडक्ट एट होम, you don't have to necessarily do things by yourself. You can have someone else do for you because you have a product.
So what is your product in the market? Is your product helping somebody achieve something? So सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है प्रोडक्ट का वो क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट किसकी हेल्प कर रहा है, क्या करने में हेल्प कर रहा है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. दिस इज द अनदर कॉन्वर्सेशन आई एम गोइंग टू डू इट. बट पहला चीज क्या है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस में डिफाइन करना. दूसरा कि आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट 3 साल में क्या करेगा. ओके, दैट इज द सेकंड थिंग. प्रॉफिट हो गया, प्रोसेस सॉरी पहला प्रॉफिट हो गया, दूसरा आपका पोजिशनिंग हो गया, तीसरा आपका प्रोडक्ट हो गया, चौथा हो गया आपका प्रोसेस क्या है. Yesterday, people who have attended the session yesterday by Harmeet, who's a budding entrepreneur, he's a wonderful entrepreneur, managing huge set of businesses. उसने प्रोसेस के बारे में कल बात की थी कि आपका प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस आप हैंडल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, जिससे आपकी कंपनी डे बाय डे प्रॉफिट कमा रही है. आपके कस्टमर से डील करने का प्रोसेस क्या है, हाउ यू डील विद योर एम्प्लॉइज, व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू फॉलो डे इन डे आउट, हाउ टू यू नो have qualified leads, what is the process of marketing, what is the process of operations, what are the different processes. If you're a solopreneur, what is the process that you follow to reach out to your customer? So what are your processes? If you go to bigger companies, बड़ी कंपनीज में कौन से प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो डे इन एंड डे आउट स्मूथ ऑपरेशंस के लिए, जहां पे आप नहीं भी हो तो भी आपका बिजनेस चलता रहे. दैट इज द फोर्थ थिंग दैट यू विजुअलाइज कि आपके नेक्स्ट 3 साल में प्रोसेस क्या होने वाला है. ठीक है, तो प्रोसेस आज आपका बेशक आपके डिफाइन नहीं है, तो हो सकता है नेक्स्ट 3 साल में आपका प्रॉपर 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 प्रोसेस डिफाइंड होगा. ये भी गोल आपका हो सकता है. तो दैट इज द फोर्थ एस्पेक्ट इन द विजन मार्क. पहला था पर्पस, उसका उसमें व्हाट आर यू विलिंग टू डाई फॉर, आपको पता है वर्ड के लिए क्या करना है. दूसरा आपका था विजन. विजन के अंदर अगेन 5 एस्पेक्ट्स थे. पहला मैंने बताया, पहला आपने देखा कि मैंने फोर्थ तक लेके गया. पहले प्रॉफिट था, दूसरा पोजिशनिंग था, तीसरा आपका फोर्थ आपका प्रोसेस था, तीसरा मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था आपको, फिर रिमेम्बर. और मैं भी आज पे आता हूँ. फोर्थ आपका प्रोसेस है. ये प्रोसेस किस चीज क्या आपका किस प्रोसेस से आप काम कर रहे हो, किस प्रोसेस से आपका बिजनेस चल रहा है. द लास्ट पीस इज विच इज 5 पीस इज कॉल्ड पीपल. कौन से लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं. एज अ बिजनेस ओनर, what are you dealing with, whom you're dealing with day in and day out, who are your customers, who are your team members, who are your employees, जिनके साथ आप consistently डील कर रहे हो. Now people aspect is often ignored. हमें लगता है कि लोगों लोगों को तो पैसे दो और एम्प्लॉय बना दो, बस बात खत्म हो गई. उनको पैसे दो, वो हमारे लिए काम करेंगे. पर क्या लोग आपके मरने के लिए तैयार हैं आपकी कंपनी के लिए? यानी कि मरने का मतलब क्या, पीपल आर विलिंग टू वर्क डे इन एंड डे आउट सो दैट यू बिकम हाईली प्रॉफिटेबल, और या फिर हाईली अकम्प्लिशिंग द पर्पस दैट यू आर हियर फॉर. मतलब उसके लिए है कि जो पर्पस पूरा क्लियर, आपका पर्पस के साथ खड़े हैं क्या, जो ऐसे वो अलाइनमेंट है क्या आपके साथ. तो आफ्टर दिस 5 पीस जो मैंने आपको बताया, उस 5 पीस के साथ आप विजन एक्सरसाइज करोगे. आप अपनी टीम के साथ, अभी गोल 2023 का खत्म हो जाएगा तो आप कर सकते हो. द थर्ड थिंग द थर्ड थिंग दैट यू आस्किंग फॉर is what? The third thing is called, what are you willing to stand for? आप किसके लिए खड़े हो. पहला था पर्पस, जिसके लिए आप मरना चाहते हो. तीसरा है जिसके लिए आप जिंदा रहना चाहते हो. What are you willing to live for? That is something which is your value. Alright. Now, वैल्यू में क्या होने वाला है. वैल्यू में बहुत लोग बोलते हैं वैल्यू का मतलब होता है कि मेरा तो वैल्यू जी ऑनेस्टी है जी, मेरा वैल्यू तो इंटेग्रिटी है जी. पर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है. इंडिया में बोलते हैं अतिथि देवो भव वैल्यू है जी, पर क्या वो वाकई ऐसा वैल्यू है. स्टारबक्स अगर बड़ी कंपनी के बारे में बात करें तो उनका वैल्यू सर्विस है. आपको क्लियर ही पता चल जाता है कि जब स्टारबक्स में आप घुसते हो, कंपनी का दरवाजा खोलते हो, सॉरी और उसका स्टारबक्स का दरवाजा खोलते हो, आपको पता है कि वहां पे मुझे सर्विस अच्छी मिलने वाली, कोई मुझे बोलने नहीं वाला कि आप चाय पियो करके अब आराम से बैठ के बात कर सकते हो आप.
नाउ दिस इज वन वैल्यू। अगर आप टाटा के बारे में बात करो तो आपको बहुत ही क्लियर है कि टाटा में कुछ भी हो जाए इंटेग्रिटी होती है। बहुत सारी कंपनी में इंटेग्रिटी नहीं होती है, वो उनका नेगेटिव वैल्यू है। बट व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर विलिंग टू स्टैंड फॉर? तो एज a business owner, even if you're a solopreneur, even if you're a business coach, even if you're an individual, तो अगर आपका वैल्यू क्लियर नहीं है कि मैं किसके लिए बिजनेस में रात रात खड़ा हो सकता हूं, मेरा क्या डिसिप्लिन है जिसके लिए, क्योंकि वैल्यू फिर बिहेवियर डिजाइन करता है। बहुत लोग बिजनेस ओनर्स बोलते हैं कि मेरा तो ये डिसिप्लिन ऐसा है, रात के 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं 10 बजे सोता हूँ, एक डिसिप्लिन बन जाता है। पर वो डिसिप्लिन कहाँ से आता है? व्हाट इज योर कोर वैल्यू? पर आपका अगर वैल्यू डिफाइन नहीं है, आप सिर्फ पैसों के लिए भाग रहे हो, तो आप स्ट्रेसफुल बिजनेस कर रहे हो, या आप बिजनेस में एंटर ही नहीं करना चाहते बिकॉज आपने स्ट्रेसफुल बिजनेस ओनर्स को देखा है। सो व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर हियर एंड विलिंग टू स्टैंड फॉर? दैट इज द थर्ड पर्टिनेंट क्वेश्चन। आपका किसके लिए आप रहना चाहते हो, किसके लिए रोज रहना चाहते हो? आपका वैल्यू हेल्थ भी हो सकता है, हेल्थ एंड फिटनेस भी हो सकता है। और वो वैल्यू वैल्यू जो हेल्थ एंड फिटनेस है, आपकी पूरी टीम जो आपके साथ है, वो भी आप हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर रहे हैं, राइट? सो मैं एक कंपनी में काम करता था, आई मीन आई डोंट नो नेम ऑफ द कंपनी। उनके लिए मैंने काम किया, मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था उनका। बहुत सारे वैल्यूज थे, पर एक वैल्यू बहुत ही क्लियर था। उनकी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय का पेट नहीं निकला हुआ था। दे वर ऑल फिट, मतलब राइट फ्रॉम टॉप टिल बॉटम, एवरीबॉडी वाज फिट स्ट्रेट, एंड देयर वाज समथिंग अमेजिंग। मतलब उनका कंपनी का वैल्यू क्लियर नजर आ रहा था, हेल्थ है। और वाकई मैंने जब सीईओ से बात करनी शुरू करी, हमने कोचिंग जब शुरू किया, मैंने स्टार्ट कोचिंग विद द सीईओ, व्हाट रियली आई गॉट इट, that they spend tremendous amount of time, everyone individually and as a group, how to have the highest value of health, कैसे हम longevity बढ़ा सकते हैं, वो कंसिस्टेंटली सोचते रहते हैं। अब ये वैल्यू कहीं ऐसा नहीं था कि किसी ने इंपोज किया लोगों को, एम्प्लॉय को, उन्होंने अट्रैक्ट किया। एम्प्लॉयज भी वैसे ही आते थे, फिट एम्प्लॉयज आते थे, और फिट एम्प्लॉयज को ही रिक्रूट करते थे और फिर उनको और फिट बनाते थे। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि उनके कंपनी का जो एक अकाउंटेंट था, उसकी एज अबाउट 55 थी, वो 35 से ऊपर लगता ही नहीं था। बिकॉज दैट इज एन इनहेरेंट वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रोसेस, द एम्प्लॉयज, इंटरनल एम्प्लॉयज को, एक्सटर्नल कस्टमर्स को देखो, जो उनके सामने आता था, जो उनके वेंडर होते थे, वो भी फिट रहना शुरू हो गए। The impact was so huge, whosoever you started interacting. I mean, when I used to work with them for the next for 9 8 9 months, I also used to go to the gym regularly because that was the impact they were creating in the whole world. And yes, I mean, of course, right now because of my health, yes, those things happened in my health. I took medication, so my fitness level is not that great. But when I work with them, my fitness was at the highest peak in 2018-19. You can see my pictures all around. You can see Facebook also. Now, the point is, what is the value that you are willing to take a stand? इंटेग्रिटी भी हो सकता है, बट आपको ऑनेस्टली पूछना, क्या है आपकी इंटेग्रिटी है? क्या आपका वैल्यू ऑनेस्टी है? क्या आपका वैल्यू कस्टमर सर्विस है? क्या आपको क्लियरली डिफाइन आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बिजनेस ओनर्स के लिए, एज अ माइंडफुल person, as a mindful driver of the business, is what is that you're willing to die for? Why you exist as a company or as a business owner? पहला सवाल आपका ये है। सेकंड सवाल क्या है कि व्हाट आर यू विलिंग टू, व्हाट इज विजन फॉर नेक्स्ट 5 years, 3 years, सॉरी 3 years, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपकी प्रोसेस क्या है, और आपके पीपल कैसे हैं। ये 5 पीस को आप देखोगे। फिर तीसरा सवाल क्या है कि व्हाट इज योर वैल्यू, व्हाट आर यू विलिंग टू लिव फॉर, ऑलराइट? सो ये 3 पर्टिनेंट क्वेश्चन जब आप पूछ लेते हो अपने अपने लोगों से, अब पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, यू आर अ ड्राइवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस ओनर। सेकंड, आपके जो की लोग हैं, जो की आज के पार्टनर्स हैं, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट, उनसे सवाल पूछना है। और तीसरा सवाल सबके साथ पूछना है, सबके बीच में पूछना है कि क्या आपका वैल्यू सिस्टम है। जब ये 3 सवाल पूछे जाते हैं तो आपका बिहेवियर डिफाइन होता है। आपका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। फिर वो बिहेवियर धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद आपका
कल्चर में आ जाता है, आपका रूटीन में आ जाता है, आपके रिचुअल्स में आ जाता है। फिर वो जब रिचुअल कल्चर बन जाता है आपकी कंपनी का, अगर आप कंपनी जब बड़ी होती है, जैसे ऐसे ग्रो अप होती है, तो फिर वो कल्चर डिफाइन करती है कि कितनी बड़ी कंपनी में आप जा सकते हैं। देखा ये जाता है जो ये चीजें करते हैं। I'm going to give you a science behind it. I'm going to give you a data behind it. हमने बहुत कंपनी के साथ काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनी, I don't want to name it here at this platform, but all those companies have grown tremendously when they worked on these three pertinent questions. Even the individuals, even the entrepreneurs have really gone tremendous output after they asked these three pertinent questions. तो अब ये रिसर्च भी है, वो रिसर्च राज सिसोदिया जी ने लिखा था कॉन्शियस कैपिटलिज्म की एक किताब में, फॉर्म्स ऑफ इंडिया में। उसने बोला था कि जो कंपनीज में ये कॉन्शियस पर्पस, विजन और लीडरशिप होती है, वो कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स 500, जो कि एक अमेरिका में एक स्टॉक इंडेक्स है, उससे 1100 गुना, सॉरी 1100% ज्यादा ग्रो करती है 4-5 साल के पीरियड के अंदर। So if you are a business owner, or if you are an entrepreneur, if you are a semi-business owner, if you want to take business to the next level and grow up, these are the three questions that you have to ask yourself. If you can do it by yourself, do it. If you can want to take my help, I'm here as a business coach. You can ask Shabana, and I will be able to help you to take the business to the new level. With this note, I really want to thank you. I really have to take a hard excuse next 3 minutes or 4 minutes. If you have any questions, कोई है यहाँ पे जो सवाल पूछ सकता है, I'll be here till 8:40. Then I have to go for a hard stop. Until then, this is all I have to say. Thank you. Thank you, Anybody Vinay. has any questions? Yeah. No question as such, but really a wonderful session. All the aspects that you covered it and you explained it so beautifully. So thank you. It is a good review for all the entrepreneurs, including me. So I was also doing the exercise as you were saying. So thank you. Great. Thank you so much. I know a lot of people were expecting in the Zoom session that it will be like another mindfulness session, but a lot of business owners who are actually watching on YouTube can take this benefit later also. So maybe you can circulate this video Yeah, sure. to various business owners also. Yeah. Okay. Thank you so much. I have a hard stop right now. You have any questions, Shabana? And if you have to ask me, otherwise. Uh, so, no question as such, but if you would like to share any example, personally, that you know, any business here in the local context of Delhi NCR maybe or India. Yeah. Yeah, there are many examples. I don't want to name of the company, but last 2 years I've worked about 5 to 6 companies, and a lot of companies are now listed companies. Uh, there was one company whom I worked in the year 2019, and when they visualized the company to be 500 crores when they were about only 150 crores. So that goal was seeming impossible. But the moment we did this exercise, after this, I did this exercise, worked with them for about 9 months or 11 months. Now, we left them after 9, 11 months. They were like sustaining our at those times. So now I see this company now is about 450 crores in like the 4 or 5 years. Uh, so that's the kind of impact that gets created when you do this. Because अभी तो मैंने सिर्फ आधे घंटे में बोला, लेकिन ये एक 9 से 12 महीने का एक्सरसाइज है। तो बहुत सारी कंपनीज है। एक कंपनी जो एक स्टॉक मार्केट का ब्रोकरेज कंपनी है, तो उसके साथ भी हमने ये काम किया। तो द कंपनी एक्चुअली वेंट ऑनलाइन एंड सॉरी have the app things and everything। बहुत तो द ब्रोकरेज कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया, और बड़े सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने फीचर लॉन्चेस किए। सो अगर आप छोटे बिजनेस ओनर्स के बारे में आप बात करो तो बहुत तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स जिसके टर्नओवर 40 से 50 करोड़ कंपनी टर्नओवर, उनके साथ भी हमने काम किया। If you ask me, I work with entrepreneurs, solopreneurs, where I don't provide the whole aspect of vision and purpose and virtues. I do leadership coaching with them, where they can see for themselves कि यहाँ से हम business की शुरुआत से करते हैं, because they're the drivers to build a big organization. तो
various things. बहुत काम किया हुआ है. Right now at this platform, I'm not able to talk about those names. But offline, if you ask me, I can give you a lot of testimonials. Awesome. Yeah, yeah. Thank you for sharing that. Yeah. Thank So thank you so much, Shabana, for this opportunity to share my views, and we'll talk it later. Thank you very And much. thank you for leading it while you're really pressed for time. So thank you so much. Yeah, no worries.